Assalamu alaikum. On your screen, you can see my name. I am your biology teacher. I hope you all are fine and safe at home. I am Mrs. Nilofer Ijaz. One thing I like to clear here that today we are going to start our lecture number 20. When we were taking lecture number 19, there were some technical issues. So in the time which will left over at the end, I verbally revised the lecture number 19. So be attentive and keep the book with you. Clear? And one thing more, that on 26th of the August, due to the rain, the lecture was dropped. The audio lecture was dropped. But I have given you an assignment, that is the assignment number 11. There were two questions, morphological difference and the importance of the vascular plant. After reminding me by somebody, I have loaded the assignment number 12. Yesterday, I have given you assignment number 12 in place of number 11 because that was repeated by my mistake. For assignment number 12, you have to draw a diagram, and for your answer about jellyfish, you can see the answer on page 106, phylum Cnidaria, on the last paragraph. Clear? Now, Bismillahirrahmanirrahim, and we start our lecture 20. As we were studying the phylum, now we are on phylum Mollusca. This is the number 8 phylum according to your syllabus. What are phylum? Different invertebrates, because 90% of the animals are invertebrate on our planet. These invertebrates are classified into group which is called invertebrata. For further convenience, scientists have divided them into different phyla. Phyla is a plural and phylum is a singular. 9 phylums are included in our course. 9 phylums are included in our course. This is the phylum Mollusca, what we will study. Take a quick look. Example, pictures. I will send the phylum Echinodermata and the picture. This, and in the last, we will revise this chapter by the name of main points of chapter Invertebrata. Clear? These are the topics we are going to study today. Now, chapter 20. Today is 11th of September and we are starting chapter 20. Now remember, when you will start your new chapter, make a title page. In this assignment, the title page will be, you have to make by the name of invertebrata.
and your assignment will be on journal number 2. On your screen, characteristics of phylum Mollusca are here. Phylum Mollusca, animal of this group have a soft body. Animal of this group has soft body. The body is soft. Body of animal is enclosed in a thin fleshy cover called mantle. ये वो वाला मेंटल नहीं है जो अक्सर आप लोग एक दूसरे को कह देते हैं he is mental, she is mental. In here, this is the covering and it is called mantle. The body is enclosed in a fleshy covering called mantle. That mantle is soft to hard. Many molluscs or the molluscs, whatever the plural, are covered over externally by a hard non-living shell. Now there are two types of mollusks, one with fleshy covering called mantle and one group is with hard covering that is called shell. The fleshy organ or foot is given out of the shell on the ventral side of the body. Its foot helps in locomotion. They are found in water and as well as on land. That was the characteristic. Animals of this group have a soft, fleshy body enclosed in a thin, fleshy cover called mantle. इस ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, नरम होती है और उसके ऊपर एक फ्लैशी कवरिंग होती है. इस फ्लैशी कवरिंग का नाम मेंटल होता है. अंडरलाइन कीजिए दिस वर्ड को, ये कभी भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. दैट इज कॉल्ड मेंटल. जबकि दूसरा ग्रुप एनिमल्स का वो है many mollusks are covered over externally by a hard non-living shell. एक खास किस्म का, जैसे वो आप सी साइड पे जाते हैं सीपियां जमा करते हैं ना, तो ये सीपियां क्या है? एक्चुअली these are the shell of phylum Molluscous animals. These shells are made up of calcium carbonate. Underline कीजिए the word. Open your book. बुक साथ रखा करें. पेज 111. 111 है पेज का नंबर 111. The body is made up of calcium carbonate. इनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरे और चीजें मिला के बनती है. कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली हम कॉमन लैंग्वेज में चूने को कहते हैं. जो व्हाइट वॉश में चूना यूज होता है ना, छत पे व्हाइट कलर का होता है. They most occur in water, but some are found. ये ज्यादातर पानी में होते हैं, but some are found on land. A fleshy foot comes out. इसकी बॉडी की जो वेंट्रल सरफेस है, जो नीचे की सतह है,
उसमें से एक फ्लैश जोश की तरह का चीज बाहर निकलती है, इसे फुट कहते हैं. इट हेल्प इन द लोकोमोशन. द स्ट्रक्चर ऑफ द शेल plays an important role in identification and further grouping of mollusks. Have you ever seen shells? Shells of different shape and sizes and the color. पिछली में 2 दफा शेल घुमा होता है, बाद में बहुत बड़ा शेल होता है. इसके अंदर कंपार्टमेंट्स बने होते हैं और उन कंपार्टमेंट की बेसिस पे मोलस्क की फर्दर क्लासिफिकेशन हाई स्टैंडर्ड पर होती है. They are found in water as well as on land. Example: snail, pulse, squids, octopus, mussel. These are the examples. Snail, pulse, squid, octopus, and the mussels. These are the pearls, real pearls. You can see a covering. I am not using my cursor because sometimes it moves. Now, this is the mantle. This is the shell. Sorry, this is the shell, and this is the animal. This is the body of animal, and it produces pearls. Here, next is snail. This is a garden snail. You can see the snail, the body of snail is enclosed in a hard shell. It is coiled structure. It is coiled structure. These coiling, they are helpful in the classification. These two parts, they are called antenna. At the tip of antenna, eyes are present. This is the mouth, and this structure is called foot. This structure is called foot, and with the help of foot, it moves from here to there. Now, this is the picture of squids. It is a kind of fish. In many countries, especially in European countries, it is taken as a food. Now, it is also used by the Saudis. They also eat squids. I don't know it is whether halal or haram. I have no idea. This is the eye. This is the head. These are the two, 1 and the 2. These are the tentacles or the sense organs. These are the arms. With the help of it, it captures the food. And this is the covering. This is called mantle. This is the soft covering, and this is called mantle. This is the covering, and this is called mantle. Now, next is octopus. Octa means 8, and the pus for feet. It has 8 feet. काउंट कर लें आप, तो ये 8 होंगे. Clear? Have you counted it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and in the last, this one is the 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये आपको एक लास्ट में इधर नजर आ रहा है 8. This is the head, these two prominent eyes, this is the body. Octopus helps with the help of this, its spores or its leg, it moves from air to there. It is found only in seawater. Octopus is an organism of phylum Mollusca. Next is mussels. These are the mussels. They are eaten by the European people. This is the organism which is found inside. This is the organism, and this covering, this is the covering. They do not produce pulse. They are the mantle or the covering or the shell.
It is originally in this form, in the closed form, and from this portion its food comes out. When you boil it, it will open like that. Remember, it was eaten by Mr. Bean. Mr. Bean जो खा गए थे, आप सबको याद होगा. If you have seen, these are those mussels which were eaten by Mr. Bean. Now next is phylum Echinodermata. Echinodermata have rough spiny skins. They are entirely marine. ये marine में पाए जाते हैं. इनकी body पे skins होती हैं. पेंटामेरस होते हैं. इनके पास पांच चीजें होती हैं. They do not have head eyes. इनके पास ग्रीन वगैरह कुछ नहीं होता. और इनमें एक खास वेस्कुलर सिस्टम होता है जिससे वो रॉक पर ग्लाइड करते हैं. एग्जाम्पल स्टारफिश, सैंड डॉलर, सी क्यूकम्बर और सी अर्चन है. दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टारफिश. अब इसे कैरेक्टर को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट चले गए. Echinodermata have rough spiny skin. इसकी स्किन जो है वो रफ होती है और इस पे स्पाइन होते हैं. क्यों? इकाइनो मीन स्पाइनी, डर्म मीन स्किन. इकाइनो मीन स्पाइनी एंड डर्म फॉर्म स्किन. स्किन के ऊपर स्पाइन्स होते हैं, बारीक बारीक कांटे जैसे उभार होते हैं. दे आर एंटायरली मेरीन. ये टोटल समंदर के पानी में पाए जाते हैं. फ्रेश वाटर में, रनिंग वाटर में, मीठे पानी में ये नहीं पाए जाते. स्ट्रीम, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड, इनमें इकाइनोडर्म्स नहीं होते. दे आर पेंटामेरस. पेंटा मीन 5. इनकी 5 नुमाया टांगे या आर्म होते हैं. दे डू नॉट हैव हेड, आई और इवन ब्रेन. इनके पास, अभी आप जितने भी मुलास्क पढ़ते आ रहे हैं उसमें आपने देखा है ना कि मेजॉरिटी के पास आईज भी है, हेड भी है और फीलर भी है, सेंस ऑर्गन्स है. इट मीन के पास ब्रेन भी है. इनके पास ना ब्रेन है, ना आईज है और ना ही इनके पास कोई हेड जैसी चीज है. दे हैव अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम. इनकी बॉडी में छोटी छोटी ट्यूब फीट्स होती हैं जिनसे पानी, मेरीन वाटर अंदर जाता है. और ये ट्यूब फीट जब फिल अप हो जाती हैं तो इनकी मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ग्लाइड करती है. इट कैन नॉट स्विम. ये स्विम नहीं कर सकती. ये अपने आप को जिस जगह मौजूद होगी, पानी भरने के बाद वो पानी फीट में, ट्यूब फीट में आता है जो उसको खिला देता है और वो उसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ग्लाइड करती है. Examples are starfish, sand dollar, sea cucumber, and the sea urchin. Echinoderms have rough spiny skin. Rough spiny skin होती है. They are found only in sea water. ये सिर्फ समंदर के पानी में पाए जाते हैं. They are pentamerous. तो इनके आर्म होते हैं, जो इनके बाजू होते हैं वो 5 होते हैं, चाहे कोई सी भी टाइप हो. स्टारफिश की बहुत सारी बेशुमार टाइप है. इनके अंदर एक खास सिस्टम होता है. अगर बुक आपके पास है तो पेंटामेरस को अंडरलाइन कीजिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम को अंडरलाइन कीजिए. हैव अ यूनिक वाटर सिस्टम. ऑपरेट द सॉफ्ट ट्यूब शेप फीट. छोटी छोटी ट्यूब, जैसे ट्यूब होती है ना, छोटी छोटी सी ट्यूब. स्ट्रॉ को अगर आप कट कर दें, छोटी छोटी ट्यूब बन जाएंगी ना. इस टाइप के इसके पास फीट होते हैं जिनको ट्यूब फीट्स कहते हैं. These tube feeds, they enable the animal to glide over the rocks in water. ये पानी में स्विम नहीं करती, पानी की करंट के साथ फ्लो जरूर करती हैं, लेकिन इनमें स्विमिंग फिश की तरह, स्क्विड्स की तरह, ऑक्टोपस की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की सलाहियत नहीं होती. ओनली दे स्विम विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट और दे ग्लाइड फ्रॉम रॉक टू रॉक और रॉक टू वाटर. ये किसी भी रॉक पर अगर मौजूद है तो जो पानी इनको टकराता है, टच करता है,
तो वो उनकी ट्यूब फीड्स में भर जाता है। ये ट्यूब फीड्स जब फिलअप हो जाती है तो उसकी मदद से वो ग्लाइड करता है, जंप करता है एक जगह से दूसरी जगह। They do not have brain, eyes, even or head. Common examples of phylum Cynodermata are starfish, sand dollar, sea cucumber, and the sea urchin. Now, on your screen, you can see there are two types of starfish. Count it. They both have 5 arms, and this is the ventral side, and you can see these are the feet. With the help of these feet, which is called tube feet, at the base of this area, a mouth is present to take food. What are starfish? On page 111, on the last 3 lines, इनको underline कीजिए. Starfish, page number 111, underline the last paragraph. Starfish has a plate-like central disc. This is a central disc. This is called the central disc. It is a plate-like. Right? In the center, a mouth is present. These 5 are its arms. 1, 2, 1, 2, 3, 4, and 5. These are the 5 arms. 1, 2, 3, 4, and 5. Here on the ventral side, not in that side, mouth is present. Now move to the next example. This is a sand dollar. I don't know why the name is dollar. It doesn't look like a dollar, but it is called sand dollar. The body is flat. It is not divided into arms. It doesn't have arms, but you can see 1, 2, 3, 4, and the 5. These are the 5. They indicate the arm. And this is the ventral surface, and you can see thousands of tube fins. Next is sea urchin. Sea urchin, on your page 111, there is a line written about, in the last paragraph, about sea urchin. Sea urchin has a ball-like body without arms. Its body is covered over externally by long spines. You can see this is the 3 types of sea urchin. These are the 3 types of sea urchin. The spiny structures are present all over the body, here, here, and here. This is very sharp spine. These are the different types or the kinds of sea urchins. Is it clear? Now the sea cucumber. Sea cucumber, its name is sea cucumber because externally it looks like as a cucumber, but very ugly cucumber. Nobody wants to eat that such cucumber. That man is taking out cucumber from the sea. Its body is covered by spines. You can see these are the spines.
These are the spines. They are covered all over the body. At the base, you can see these are the tube feet. ये tube feet होते हैं जो body के अंदर मौजूद होते हैं. So, what we have studied in the phylum Echinodermata, I repeat for you. Echinodermata have rough spiny skin. Echinodermata के पास rough spiny skin होती है. They are found only in sea water. It means they are totally marine. ये सिर्फ समंदर के पानी में पाए जाते हैं. इनका फ्रेश वाटर में ये नहीं मौजूद होते. They are pentamerous. इनके 5 पाँव होते हैं. पेंटामेरस यानी अगर आप इनको देखें तो इनके 5 आर्म होते हैं. But it is not necessary in case of sea cucumber or in case of sea urchin. They have a very peculiar system of water. This is called water vascular system. पेंटामेरस और वाटर वेस्कुलर सिस्टम को अंडरलाइन कीजिए बुक में या आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. These water vascular system, they pumps the external water through their bodies. The vascular system operates the soft tube-shaped feet called tube feet. Tube feet को भी अंडरलाइन कीजिए. ट्यूब फीट जो होती है उनमें पानी जब भर जाता है उसको ग्लाइड करने में मदद देती है. These tube feet which enables the animal to glide over the rocks in water. जो रॉक्स है उनके ऊपर जंप करने में मदद देती है. Because it cannot swim by itself. इसके पास स्विम करने का कोई ऑर्गन नहीं होता. वाटर की करंट के साथ तो ये मूव करती है लेकिन स्विमिंग की सलाहियत इसके अंदर नहीं होती. इट कैन नॉट स्विम. It cannot swim. But it glide. ग्लाइडिंग क्या है? छोटी छोटी जंप्स को ग्लाइड कहते हैं. ये जंप कर सकती है एक रॉक से दूसरी रॉक पर. ट्यूब फीट्स में जब पानी भर जाता है तो ये ग्लाइड करती है. They don't have head, eyes, even the brain. इनके पास ना तो आई है, हेड है और ना ही ब्रेन है. बट दे हैव अ माउथ. इनके पास एक माउथ है जिससे वो फीडिंग का काम करते हैं. कॉमन एग्जाम्पल है फाइलम इकाइनोडर्मेटा की स्टारफिश, सैंड डॉलर, सी क्यूकम्बर एंड द सी अर्चिन. समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से. स्टारफिश के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इसके 5 आर्म्स होते हैं. बॉडी इज कवर्ड विद स्पाइन. देयर इज अ माउथ इन द सेंट्रल डिस्क. देयर इज आल्सो tube feet and the anus is also present, and the body, it takes food, digests it and flow out through the anus. Now the main point of character in vertebrata, main points of chapter, main points of chapter in vertebrata. क्योंकि आपका लास्ट टाइम जब लेक्चर गया था 19, उसमें कुछ इंटरप्शन बार बार हो रही थी. तो I made these points to revise the whole chapter. Right? These are the points. इसके साथ कोई पिक्चर नहीं है और आपको ये पॉइंट जो है वो मैं रिवाइज करती हूँ. Invertebrate do not have backbone. Invertebrate पे हमने क्या मेन चीज क्या पढ़ी थी? मेन पॉइंट क्या था? जितने भी एनिमल्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. हमारी बैक पे एक जो बोन होती है जिसे बैकबोन कहते हैं, इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस पर एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है.
पहला ग्रुप कहलाता है इनवर्टिब्रेटा, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, बैकबोन नहीं होती। दूसरा कहलाता है कॉर्डेटा, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। For the convenient, group Invertebrata is divided into phyla. स्टडी के लिए, आसानी के लिए इस ग्रुप को फाइलम में डिवाइड किया गया है। सिंगल फाइलम कहलाता है और प्लूरल जो है वो फाइला कहलाता है। 9 phylums are we studying in our chapter Invertebrata. नाइन फाइलम जो है वो हम इनवर्टिब्रेटा में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट फाइलम इज द प्रोटोजोआ। प्रोटो मीन सिंगल, जोआ मीन एनिमल। Single celled animal or the unicellular animals are called protozoa. Proto means single and zoa means animal. Single celled animal or the unicellular organisms are called protozoa, or the phylum they are included in phylum protozoa. Examples: they were divided into two groups, either free living or parasite. Examples of free living were amoeba, paramecium, euglena, desmid, etc. There are thousands of protozoa which are included in phylum Protozoa. While parasitic protozoa, we studied Plasmodium and amoeba. Both are the parasite. Plasmodium, it is the parasite of human being. Whenever a mosquito bites, it produces a protozoa in our RBCs. जब भी मच्छर हमें काटता है तो वो एक प्रोटोजोआ हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करता है. Not the every mosquito produce Plasmodium. Only female mosquito Anopheles produce Plasmodium. Second phylum was that is missing from here, Porifera. It is not written here. Protozoa के बाद आता है Porifera. Porifera is a multicellular, uni के बाद आ गया multicellular organism are included. But how they do not form tissue, layer नहीं बनाते, terms नहीं बनाते. These cells are more than one in number and they are spread all over the body, or you can say they are loosely arranged in a body, and the pores are left in the body. They are called porous. Cycon, Venus flytrap were the example. Bark sponge were the example. Next is Cnidaria or Coleanthera. They are diploblastic. मेन थिंग क्या थी, पहला आपने पढ़ा प्रोटोजोआ जिसके अंदर एक सेल होता है, फिर प्रोटोजोआ पढ़ा जो मैनी सेल्स होते हैं, पोरीफेरा पढ़ा, पोरीफेरा में मैनी सेल्स होते हैं लेकिन लेयर नहीं होती. Cnidaria are diploblastic, that they have two layers, ectoderm and the endoderm. बीच में जो है इनके पास एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे मीजोजीडिया कहते हैं. जेलीफिश इसकी एग्जाम्पल है. दे आर फ्री लिविंग, ये पानी में पाए जाते हैं और फ्री लिविंग है. नेक्स्ट इज प्लेटीहेलमिंथस. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन ट्राई मीन थ्री, इनके पास 3 लेयर हो जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्म. मीजो मीन दरमियान, दरमियान में एक और लेयर बन जाती है. इसमें प्लानेरिया फ्री लिविंग था और टेपवर्म और लिवर फ्लूक वर द पैरासाइट ऑफ कैटल्स एंड द ह्यूमन बीइंग. Nematodes are unsegmented and the roundworm. They are the parasite.
नीमाटोड जो थे अनसेगमेंट थे, सिलेंड्रिकल थे और दे आर पैरासाइट। ह्यूमन बीइंग में पैरासाइट होते हैं, बाद दफा कुछ एनिमल्स में भी पैरासाइट होते हैं। नीमाटोड्स में प्रॉपर माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एनस होता है और इनमें मेल एंड फीमेल होते हैं। Ascaris lumbricoid was the example. Ascaris lumbricoid. Annelids are segmented. Nematode unsegmented थे तो annelid आ गए segmented। ये याद रखिए कि platyhelminthes के बाद हम जितनी चीजें पढ़ते हैं वो सारी ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाती हैं। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडवांस होते जाते हैं। पहले एक सेल पे गए, फिर मैनी पर गए, फिर 2 लेयर पे गए, फिर 3 लेयर पे। अब ये जितनी यहाँ तक के ह्यूमन बॉडी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, 3 लेयर इसके अंदर मौजूद होती है। एनालिट में बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ जो है ये सेगमेंटेड होती है, अंदर से भी और बाहर से भी ये सेगमेंटेड होती है। Each segment is complete, having many digestive system, excretory system के अंदर मौजूद होता है। रेस्पिरेशन ये बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। हाँ, जो चीज बड़ी स्पेशल है एनिलीड में जो किसी में नहीं पाई जाती, दे हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका ब्लड रेड होता है और इनमें ब्लड को पंप करने के लिए चैम्बर्स होते हैं जो हार्ट की तरह काम करते हैं और इनकी बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है क्लोज वेसल्स में। एग्जाम्पल सी अर्थवॉर्म एंड लीच। एनिलीड के बाद आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा जो हमने लेक्चर नंबर 19 में कवर किया था। आर्थ्रोपोड में तमाम इंसेक्ट, आर्थ्रो मीन जॉइंटेड, पोडा मीन लीफ। आर्थ्रोपोड में तमाम इंसेक्ट इंक्लूडेड है जो कि जॉइंटेड लेग्स इनके होते हैं। बॉडी हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है और ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं। मेटामॉर्फोसिस दो तरह का होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। मोलस्क के बारे में आज हमने डिटेल से पढ़ा कि मोलस्क आर कवर्ड विद सॉफ्ट एंड हार्ड कवरिंग। सॉफ्ट कवरिंग आपको किसमें मिली थी?